Hi everyone. I think the video is not working, so we will have an audio meeting only today. Can everybody hear me? Yes, I can. So you Yeah, all we can can hear hear you? you. So it's a little, anti-climax today. There was some problem in my laptop as well as my, niece laptop, but what we can do without it, that's absolutely fine. So welcome you all and congratulations for taking this decision of joining this meeting because I'm going to share some wonderful tips with you all. I'm just for the sake of introduction, I'll tell you I'm Monica Saroj and I'm an artist teaching people for past 10 years now from all age groups from 9 to almost 70. So with my experience, I can tell you that there are certain common problems lot of artists face. And if I take you all to your childhood, are there some critical sounds in your mind? Did it ever happen that you made something beautiful and your teacher or your parents or somebody whom you respected, pointed some mistakes in it and you felt a little bad that time? These are very small incidents, but they all get recorded in our minds. And later on in our, later years, we are so scared to pick up a brush or paint anything that it starts hindering our journey to art. So, I can see all of you. So you can all switch on your camera because I can see all of you. So I would like to know, are there any memories associated any time of your life where you were criticized or, pointed at? I can't hear. Please switch on your audios because I can't see you also. Smriti, Shakun, all their audios are off. Mrs. Singh, good evening. I can see you, but you can't see me. Yeah, what a pity. Messed up, but it's okay. Sometimes these things happen. So I just want to yeah, know of your course. opinion. Like we all have these moments in our childhood, which of course we forget when we grow up that this thing happened, but they are all stored in the memory. Mrs. Singh has already done a course on it and she'll understand this. So are there more people who remember any such critical sounds from their childhood? Soumya? You know, with me, it was always that I was not really happy with what I made. It is still now. Whatever I make, I still feel there is something, some improvement, something better could have been done with it. So I'm suffering from this. Ms. Sharma, was there somebody in your class or when you were growing up, some real wonderful artists whom you looked up to? Okay, oh wow, she paints so well or he paints so well. Some teacher or a relative whom we looked up to? Okay, wow, they paint so well and I can't paint good enough. Well, maybe because generally it happens when you're in school. There are other children who are better than you. You feel that they can draw Yes. better than you. Or it's generally when you are very young, this impression gets into your mind, and especially the teacher gives a very good or a star to a child who draws very well. Yeah, So that yeah. thing, that impression always is there in your mind. Yes, so these things, they now may appear small to you, but in your formative years, they were big deal. Not getting a star was a big deal because nobody back school, taught us that art is not always about getting a star, but it was about expressing yourself or feeling good about it. So these small things, over a period of time, they piled up. And when it was really time for us to learn, it stopped us because in my mind, there's so many things going on. You are not good enough or I didn't paint good enough. What will my parents say? Then it passes on to your neighbors and everybody. So let me do a very, very quick exercise with you all right away, in which I would request everybody to just sit straight with your spine erect, close your eyes, and remember one such moment. Any of it. Ms. Sharma, you can remember some other child getting a star, but you really wanted to get one, or anybody being criticized, और आपके लिए कुछ बहुत सुंदर बनाया था and nobody gave the kind of compliments you were expecting. Can you all see that? You can just do thumbs up because I can see all of you. Okay, do you hear some voices?
Any feelings? It could be anything. It could be some voice or a feeling of, somebody else painting better than you, or remembering her painting. Anything. It could be just anything, you name it. It's not necessarily same for everybody. Some are visual people, some listen better, some feel better. So whatever is coming in your mind right away, just close your eyes, Soumya. Just see that there is a glass wall in front of you, and beyond the glass wall, there is a TV. So just take this complete entire incident on that TV. Now visualize that scene. Now it is away from you. It's not in your mind. It's been taken away from your mind, and it's kept on a TV which is in front of you. See the color of the TV. See the brand it belongs to, whether it is on a wall or it is kept on a table. You have to visualize it really well. Now what you do is imagine there is a remote in your hand. And with this remote, if the pictures are moving, make them fixed, make them in frames. If you see any moving pictures, put them in frames. Are there colors in the picture? If there are colors in the picture, just start reducing the colors with the help of the remote that is there in your hand and make them black and white. If there are any sounds in the movie or the picture that you are seeing, please reduce the volume of those sounds. Reduce the sounds. Make them to 0. Start counting as you see on the TV. 10, 9, 8, 7, 6. Reduce the sounds of those critical sounds, whether they came from the teacher, your parents, your neighbors. Or it could be the other way around. If you can hear the praises for the other child, which you wanted, just reduce all those sounds that disturb you. I just want to know from everybody, you can just raise your thumb. Are the sounds gone? Are they little down? Great. Now just start reducing their colors completely. Like we can turn the screen dark. हमारे पास जब remote होता है तो हम screen को dark कर सकते हैं completely. So that imaginative remote, आप उनकी बिल्कुल उस screen को dark कर दो आप. When it is completely dark, just give me a thumbs up. Take your time. It's okay. You can take more time. Sometimes the memories take harder, so take your time. Okay. Great. Now, what you imagine that there is this huge rubber band. And that one end of that rubber band is in the sky, and somebody has just picked that TV and thrown in the sky. Or there is a huge blast far away from you, that TV has been broken completely. Hear the sounds of that TV shattering, completely going away. Keep your eyes closed till the time you are able to see that TV completely gone from in front of your eyes. Take your time. Whenever you feel like, you can open your eyes and look around. Soumya, how do you feel? You can open your microphone and tell me. Can't hear you.
Mrs. Singh has done this already. She's known. Yeah. But Mrs. Sharma, how do you feel about it? Better. You feel better? Soumya? Mrs. Like- Sharma, how do you feel? Slightly better. It'll only, but with time will tell. I'll see. Yes, Mrs. Sharma. There are many reasons to it. Actually, I covered, which is a very important part of anything we do in life. It's not just about art. Sometimes we are scared to go on the stage or take a leadership role because there are some kind of comparisons or critical sounds going on in our mind. That is why I did this exercise right in the beginning, so that I can get your interest. There are other things which are there in our mind when we are painting. One of it is procrastination. And one is like we start with lot of excitement, but on the way we get let loose. We don't do it. For both the reasons, because we don't have some set standard goals for ourselves. That is very important. So even if it's a small thing, like when you begin with a painting, it's very important for you to visualize its end. That is what I always tell in my workshops, that before you begin with the painting, you visualize how the painting will end, the colors, the shape, the size, because that gives a set of instructions to our brain, and it will help us complete it. Otherwise, what happens that we just pick up paper and we start drawing, and then we don't know what to do about it because the mind does not have the information for it. So always plan your painting first. That will really help you. So, and second thing, when I'm talking about procrastination, again, it is anxiety. बिकॉज हमें क्या होता है, हमें एक्सक्यूजेस मिलते जाते हैं, चलो मैं कल कर लूंगी या मैं परसों कर लूंगी, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है वही, will I be able to do it well? Am I a perfectionist? Sometimes we are such perfectionists that we don't want to do something which is below my standard. Like I have students who will practice it 3-4 times and then only show me. But I'm your teacher, I should be the first one to see your paintings. But all these things, the exercise I did will help you a lot in overcoming that. Believe me, our mind is very, very powerful. I'm an artist as well as an NLP coach. So I use all these techniques in my art as well. Mrs. Singh is there with me now for almost 6 months. I always encourage my students for the same thing. So there are 2-3 things consciously which all of you should do is, you should have a group of like-minded people. अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने बच्चों को या हस्बैंड को दिखाने की, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर द पीपल, वो ना उनको बहुत शौक होता है हमको बताने का, नहीं इसमें ना ये थोड़ा सा रह गया, बट इट एज एन आर्टिस्ट आई अंडरस्टैंड इट डजंट हेल्प अस. So first thing you need to do is put it in the group. I will tell you, as a teacher, I'll tell you usme what you need to do. Okay? When like-minded people come together, na, aap बहुत relax हो जाओगे. Nobody is judging because all are sailing in the same boat. Second thing that you should have is, you should have a mentor, somebody who will constantly guide you. क्योंकि क्या होता है कि थोड़े दिन तो हम बहुत अच्छे से करेंगे, excited होंगे about a new idea, new painting, but then after sometimes we'll go off track. So continuously our mind needs someone, like this is scientifically proven. I'm not saying it out of the blue, that you need to have somebody in your life that will constantly take you forward. So always have someone whom you can look up to and say, "Ki bhai, I'm facing this problem, you help me out." Very important. Then third is work every day. Nobody can take this away. Like practice makes you perfect. So आप थोड़ा थोड़ा रोज जरूर बनाओ. चाहे आपने एक दिन सिर्फ एक लीफ बना के देख ली, एक फ्लावर बना के देख लिया, but every day practice will take you forward. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. You will be the same as you began with. You will always improve every single day. And अगर उसमें कोई problem होगी, for example, I am there. You tell me, because as an instructor, I can see a lot of things in your painting which you can't see. Because for you it may be something like really simple कि मुझे इतना समझ नहीं आया है, कुछ नहीं आया, but I can see the painting and see the improvement in your work. So practice every single day. Anything from your side you want to know? I'm open for questions also. Soumya, any questions?
यस मैम। हाँ। मैं शैडो को हम्म। मैं शैडो का शेड नहीं दे पाती। अच्छा, आपको शैडो की शेड में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डार्क एंड लाइट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी पेंटिंग में जो शैडो होगी इट शुड बी ऑफ डार्कर कलर। आप उसको ब्लू से भी बना सकते हो, ब्राउन से भी बना सकते हो, ब्लैक से भी बना सकते हो। लेकिन क्या है, जब आप कलर को, आपने शैडो को ऑब्जर्व किया है जब आप बाहर जाते हो, आप देखते हो कभी शैडो यस को? मैम। देखते हो ना? यस मैम। तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपको बहुत ऑब्जर्व करना है। जैसे आपने आज टॉपिक लिया कि मुझे शैडो के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो आप सारा दिन शैडोज को देखोगे। उससे क्या होगा, ओके मैम। आपकी माइंड में एक इमेज बनेगी शैडो की। जब आपके माइंड में इमेज बनेगी तो आप क्या करोगे, उसको इजीली पेपर पे कर पाओगे। ठीक है? और आप क्या करो, ओके। उसको लाइव बना के देखो। जैसे आप बाहर गए, गार्डन में गए, आप देखो उस शैडो को बना के उसको पेंट करके देखो। अच्छा बुरा नहीं देखना, जैसे आपने बनाई है वैसे बना के आप मुझको पोस्ट कर देना, फिर आई टेल यू व्हाट। ठीक है? ओके। और कलर आप ओके मैम। ज्यादातर यूज है तो ब्लू कर सकते हो, उसके लिए उसमें थोड़ा ब्लैक मिक्स कर। ओके एनी अदर क्वेश्चन? मैम, मैंने एक आज पेंटिंग बनाई थी, हाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ, प्लीज आप दिखा दो। ये तो बहुत प्यारी है, आपने देखो इसमें कितनी अच्छी शैडो दिखाई है। देखो आपका आगे का डार्क है ना पूरा, यही तो शैडो है, क्योंकि जब पीछे सनसेट हो रहा है तो जो आपके ट्रीज हैं वो पूरा उसके ऊपर शैडो आ गई है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पेंट, जो भी आप पेंटिंग बनाते हो। मैम, और एक चीज थी, हाँ। जब मैं दूर चीज को डिटेलिंग करना चाहती हूँ तो वो हाँ जी। ठीक से नहीं होता। अच्छा, किस तरह से, आप कोई ऐसी पेंटिंग दिखाओगे मेरे को जिसमें आपको नहीं होता ठीक से? यस मैम, मैं आपको दिखाओ, एक दिखाती हूँ। दिखाओ। ओके, देखो ये वैसे तो बहुत ही प्यारी लग रही है, इसमें जो आप डिटेलिंग कहते हो ना, तो आपने क्या करना है, पहले सिर्फ एक फ्लावर बना के देखना है। ठीक है? आपको एक साथ पूरा नहीं बनाना, जैसे आपने बनाया है ना, पहले सिंगल फ्लावर आप ट्राई करो और मेरे को दिखाओ। ओके। उसी सिंगल फ्लावर को आपको रिपीट करके बहुत सारी बार बनाना है। पहले एक फ्लावर बनाना सीखना है। लेकिन जैसे आपका विंडो बहुत सुंदर बना है, आपने जो ब्रिक्स बनाई है नीचे वाली वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन फ्लावर्स में आपको जो डिटेल चाहिए वो वन एट अ टाइम होगा। पहले एक फ्लावर बनाना सीखना है, उसके बाद आप उसको रिपीट करेंगे। ठीक है? ओके। तो आप मुझे एक फ्लावर बना के फोटो भेजना, और उसमें ओके। पेंटिंग में भी एक ही पहले फ्लावर को देखना कैसे बनाया। ओके मैम। ओके, एनी क्वेश्चन? No, I find that, see, like when you were doing our classes and all, हाँ so जी, there was a kind of a routine, एक routine था, हाँ जी, and like, there was a greater sense of commitment at that time. यस, Okay, ये बनाना है, and हाँ tomorrow morning we have to show it to Monica, and हाँ जी, no matter what the other circumstances were, हाँ, one found ways and means of completing one's work, and यस, doing it, and one was enjoying it, and it was really nice. यस, But it continued for a while after the classes got over also. हाँ But now हाँ, that it's been quite a while, and other things have been happening, and your other commitments, you start focusing on यस, all of that. I realized that and this has been a problem kind of all through my life, that I am always waiting for the right time, the right environment, right place, right kind of everything, before I really get down to working. I'm all the time thinking, मेरे को ये करना, ये करना, ये करना. I हाँ must do जी, it. I हाँ जी, must do it. I must do it. But somehow I just don't get down to it.
अच्छा अब मैं Mrs. चीजें Singh, उसमें कर दूं, यही I think होता है, what I told you ना, that is why a mentor is required. जैसे मैं आपको बताती हूँ, yeah. when I started learning, my sir was there, Mr. D. So हम लोग की posting आ गई, we went to a different city. But what I did was I stayed in touch with him. Okay, Yeah. so when you stay in touch with a person, तो वो आपको ना हमेशा guide करेंगे. So now like I am there. Even if you are not Yeah. part of any course, you keep Yeah, yeah. sending me your paintings. Yeah. बस जब when Yeah. you are doing a course, उसमें क्या होता है, इसका एक reason होता है. मैं थोड़ा सा आपको NLP का बताऊंगी, which recently Mr. Ram Verma told us. Like there are certain parts of our mind which need constant mentoring. Like क्या होगा कि जैसे आज मैंने आपसे बात की, आप बहुत एक्साइटेड होगे और आप वो काम 2-3 दिन करोगे भी, बिकॉज दैट इज कॉल्ड अ केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि वो एक टेम्पररी चेंज होता है माइंड में. बट फॉर टू मेक इट परमानेंट, वी नीड टू बी डूइंग दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. देयर इज अ मिनिमम टाइम टू इट, कि उतने दिन आपको कंटिन्यूअस एक मेंटरिंग करनी है. तब शायद तभी आप देखो ना, ग्रेजुएशन विल बी फॉर 4 years, schooling will be for certain 12 years. They may just not be learning something new, but basically it is to change your mind. So if we really want to do anything sincerely, we need to do it at least for a year. फिर वो क्या, फिर आप committed हो जाओगे. जैसे हमें जिम जाना है, योगा करना है, आप देखते नहीं हो कि इनिशियली बहुत एक्साइटेड होते हैं, 2-3 महीने योगा करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं. So what I did was, now I found a teacher now. I learned everything, but I'm still with her because I know unless it becomes a part of my life, I will not leave her. It is something like that. It's a very natural human tendency. It's not like it's with you or anybody else. That is why that mentor thing I was saying, that we need to have the mentor for at least 2 to 3 years minimum. Yeah. And also that group energy keeps you going, Yes. Very somebody important. has already done it. उसने कर लिया, वो मैं ही रह गई हूँ सिर्फ, Yes, so I yes. need to do it. So you just, it becomes a priority. Yes. So what I'll It's start just doing that, is, maybe I'll start giving projects in my free groups as well, so that more people, they get excited to paint something. I'll start doing that, definitely. And anything. Yeah, because I just think, and I'm sure if I'm feeling it, I'm sure the others are also feeling the same way. Yes, I keep putting videos and everything to encourage I know. people. But वो तो देखते रहते हैं, yeah. But एक what happens is, you just kind of देखिए, अच्छा ठीक है, अभी तो क्लास अब तो हो गया, जैसे स्कूल से निकल गए, you lose touch with people, you may reconnect later, but that thread is kind of broken, So इसमें ना मिसिंग, गिव योरसेल्फ अ गोल. मैं बता रही हूँ आपको कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप सोचो कि आई नीड टू एग्जिबिट माय पेंटिंग्स आफ्टर अ ईयर. So for that, I'll have at least 20 or 30 paintings of mine. That will help you stay focused. Some goal to it. Or maybe I want to paint something for my daughter or daughter-in-law. तो एक आपको जब तक एम नहीं होता ना, जैसे अभी मैंने योगा कैसे सीखा, मैंने कहा मुझे योगा इसलिए करना है बिकॉज आई वांट टू गो बैक टू माय कॉलेज डेज का वेट. सो वो मैंने फिक्स कर लिया अपने दिमाग में. आई एम नॉट लेटिंग दैट टीचर गो. हम लोग कहीं भी गए, हम लोग जम्मू भी गए, सो आई कंटिन्यूड विद हर ऑन Zoom फॉर द सेम रीजन. लाइक एवरीबडी टेल्स मी, अब तो तुझे आ गया, व्हाई डू यू वांट टू स्टे विद हर? बट आई सेड आई वोंट बी एबल टू commit myself unless I'm with the teacher. That's true. That's true. I think this is just a commitment, that's what. And a mentor really helps you stay focused and definitely. I always tell you that, it was my sir. Because I stayed with him for 1.5 years. He was coming every day. That is why I could learn so much. When I was learning it in bits and pieces, तो वही होता था जैसे आप बता रहे हो कि थोड़े दिन अच्छे से पेंट किया फिर भूल गए. That is there. Yeah. Anybody else? Any questions? Mrs. Sharma? My question was same only. I'm not able to complete whatever I start. I'm not able to complete. I started a Madhubani. It is still pending. So I'm not able to complete whatever I start. अच्छा आप हाँ नहीं आप बोलिए पहले, फिर then I'll tell. मैंने कहा it is the same. What she's saying ना, it is the same. नहीं, उसके लिए मैं आपको यही बताती हूँ ना, एक तो आपका गोल होना चाहिए कि ये आप इसको विजुअलाइज कर लो, इसको कंप्लीट पेंटिंग को, कि आपकी मधुबनी ना कंप्लीट हो गई है एंड इट इज हैंगिंग ऑन द वॉल विद अ फ्रेम. Imagine the frame. These, our subconscious mind is completely working only on images.
unless you give it that, it won't let you work, Mrs. Sharma. It is so strong. 90% of our lives is run by the subconscious mind, not a conscious mind. I consciously, for example, मुझे पता है कि मुझे नहीं खाना समोसा because it will increase my weight, but unconsciously समोसे को देखते ही I will eat it. That's how so you need to give that image to your mind that ये painting बनने के बाद ऐसी लगेगी, दीवार पे लगेगी. And this is the date I'm giving to myself that by next month it will be hanging in my drawing room. So when you give these timelines to yourself, automatically आप देखना आपका अंदर से ऐसे मन आएगा कि मुझे उठ के जाके इस पेंटिंग को कंप्लीट करना है. So give that goal to yourself. For example, अगर आप उसे अपने लिए नहीं किसी के लिए बना रहे हो, तो बोलो मुझे इसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट करना है. So before that I need to complete it. That is very, and what I told us, staying in a group, painting together, having a mentor, that will help you grow. Anything else related to watercolors also you can ask. It's a meeting for that. I'm feeling so bad that I can't see, ma'am, you all can't see me, but it's okay, at least you can hear. Any watercolor related query? Ma'am, Hanji? I have a query. Ma'am, I'm not able to do draw water. You are not able to do water? ठीक है, तो आप मुझे ना I'm not able to draw water or paint it. Okay, so what you do is send me a message or any particular picture you want to paint. I'll tell you how to do it. Okay. Okay? Okay. I want to paint a picture. Can you guide me with it? Of course I can guide you. You show me, you send me, WhatsApp me that picture. I'll tell you how to do it. Should I share my screen? Okay, you share your you. screen or you can WhatsApp me later. You WhatsApp me. Okay? Okay, ma'am. That will, and then I'll tell you what to do with it. If you want to show, you can show for a minute. It's okay. But it's coming host disable participant screen share. Okay. Then you WhatsApp me. It's okay. 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 Ms. Sharma, anything else, Mrs. Singh? Yeah, I have painted a few watercolors also. I'll just send them across to your Okay. Facebook account. I'll take the pics and I'll send you. Okay. And then you can guide me accordingly what all is to be needed. Okay, definitely, Ms. Sharma. Anything from my side? Are you part of any of our groups, Ms. Sharma? Armed forces only, not No, nothing related I to the have painting few as such. WhatsApp groups in which I keep putting things, No, whatever. Okay, then I'll now check. tell me which is the group I am part of now. I don't think I am because नहीं, वो आप advanced advanced floral. learners में हो, आपको मैं इसीलिए उसमें डालती रहती हूँ updates. So whatever new I put, I always put in that group. एक मिनट में देखो. नहीं, अभी एडवांस फ्लोरल जो था उसमें से अभी नहीं है और एडवांस वाटर कलर में भी नहीं. नहीं, एडवांस लर्नर्स करके मैंने आप लोग का बनाया था. All those who have already learned. एडवांस लर्नर्स तो कोई नहीं है. आपको मैं ऐड कर देती हूँ. हाँ, प्लीज. मैंने आपको ऐड तो किया. देख रही थी. हाँ, उसमें always I'll put whatever new I do, I always put there. Oh, acha, you mentioned I'm always there to help and assess and available at advanced learners group, but उसमें I am. आपको लिंक भेजा था I'm मैंने. not part of it. ठीक है, I'll add you there, Mrs. Singh, because everything I put there. That would be nice. Yeah. Okay, then that will be great. Yeah, so just people do that. Acha, tell me this. I remember in the beginning we made those. The door and the window with the flower and all of that, no? Hanji. Yeah. So I did that again. Okay. And I put the masking tape on the side to give it a little, finishing thoda sa. Okay. ताकि अगर कोई frame में भी लगाए तो अच्छा है. Because my sister-in-law, she really liked it, and she said, make one for me. So I thought, let me give it a little
finishing thing. But yeah, so वो tape जब मैं निकालती हूँ तो वो कभी कभी बड़े बहुत, it's very time consuming, and the paper also at times at places it comes off. मिसेस सिंह, वो पेपर थोड़ा डेलिकेट होगा आपका. पेपर तो यही है, ये जो हम कौन सा 300 GSM का यूज कर रहे हैं. उसमें भी ना अलग अलग आती है, जैसे आर्चीज का या फैब्रियानो के जो पेपर होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनमें से आप मास्किंग टेप उतार सकते हो. अगर इन केस आपको मास्किंग टेप नहीं यूज करना है ना, तो आप इसको माउंट लगा के दे सकते हो लोगों को. माउंट इज दैट व्हाइट पेपर दे पुट अराउंड. I know, but is that available here? माउंट मैं तो अपने जो मेरे फ्रेम वाले हैं उनको बोल देती हूँ कि आप इस पे केवल माउंट लगा के दे दो. हाँ, तो वो खाली माउंट भी लगा देंगे. दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गिफ्टिंग एंड कीपिंग योर स्टफ आल्सो, क्योंकि एक तो माउंट लगते ही पेंटिंग बहुत सुंदर दिखती है. इट विल बी एनहांस एटलीस्ट 2-3, है ना. और आप उसके ऊपर एक वो भी लगा सकते हो, थोड़ा सा सेलोफिन वगैरह लगा के उनको रख दो. फिर सो व्हेनेवर यू वांट टू गेट देम फ्रेम्ड, आप बस उसका सेलोफिन हटा के फ्रेम कराना है तो माउंट जरूर लगा के रखा करो. The paintings that you may want to gift somebody, or you want to put, have them framed for yourself. Yeah, because otherwise it looks like paper unless you are framing it. But if you're taking it all the way from here to Delhi or some place, then वो थोड़ा सा. और वो क्या, अगर आपकी mounted होती है ना, they are ready to gift also. Sometimes if you want to gift to somebody, so with mount they look very nice. I do that. That's how I keep. So the framing guys will do it. हाँ, आप उनको बोलो कि मुझे सिर्फ माउंट लगा के देना. And at least have a 1.5 inches mount on each side. ज़्यादा छोटा माउंट भी अच्छा. Then you don't leave. There's no need to leave a margin. Then. हाँ, नहीं, मैं तो नहीं छोड़ती मार्जिन, क्योंकि मैं तो माउंट करा के रखती हूँ. हाँ, नहीं, क्योंकि जो भी हमने बनाई थी with you, वो तो हमने किसी का मार्जिन नहीं छोड़ा था. So it gave you that much more space. Yes. But it looks, it looks very neat when you remove the masking tape. Yes, the rest of it looks very neat. Nice, very nice, because it gives that mount wala effect, na. But वो होता है कि वो आपका paper strong होना चाहिए. Like what paper I am using, I can do that. Archies या Fabriano. हाँ, Archies का काफी strong होता है. Okay. चलो वो लाती हूँ, तो ठीक है. Okay. Okay. And, anything else? I think Ms. Sharma, we can now finish this meeting, and hopefully next time I'll do it very soon with some more queries and all. And I hope the video works. I was waiting. Yeah, let's have it again. Let's have it again in a few days. Yeah. And any queries that you have, you can always let me know. We can do that, and I'll start posting some challenges in the group, I think, so that people will paint. Yeah. वो डंडा चाहिए ना सबको. हाँ जी. तो आपके पास अगर कोई idea, let me know, Ms. Singh, anything you want me to do. Yeah, no, that of course. नहीं, वो तो है ही. But what I said was, that's why I used the term group energy. एक वो जो होती है ना, उससे you kind of, and everybody, and we had a very nice group. बहुत ही अच्छा, very vibrant and. आपको पता नहीं है, आपकी जाने के बाद गणेशा पेंटिंग खत्म करते करते 1 महीना हो गया है, वो दो हफ्ते की. It's going on for a month. Yeah. Ms. Sharma, I know. Sorry. हाँ जी, listen. नहीं, I just saying I couldn't do that. तो वो थोड़ा सा उसमें से वो ब्रेक हो गया. तो जिन्होंने कर लिया उनका ठीक हो गया. काफी सुंदर बनाया. एक्चुअली मैं खुद उसको एप्रीहेंसिव हो रही थी कि थोड़ा टफ है. आई होप पीपल विल बी एबल टू डू दैट, बट दे रियली डिड वेल. वो तो मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा था कि ये मुश्किल है पेंटिंग, पर बन गई. मैंने जो उसको ट्राई किया ना, आई सेड ओके, लेट मी जस्ट चैलेंज माय सेल्फ, आई जस्ट टुक इट. आई सेड ऐसे तो मैं कभी भी वही डिपेंडेंस वाली बात हो जाएगी, डिपेंडेंट. तो मैंने कहा लेट मी सी. तो मैंने इसलिए वो किया, बट मेरे को द वाटरलू वाज द ड्राइंग दैट टू द फीट एंड द हैंड्स. मैंने उसको वही कराया उनको सबसे कि ग्रिड बना के करो.
because it's a very मैंने बनाया complicated drawing, so it's better we use grid. Yeah. No, I made the grade, but somehow even that part, and then I started losing patience, and which is again not a ये ना good थोड़ी thing. different type की water colors थी. If you want, you can join the next one because ये थोड़ा different है. You know, this is a different kind of art. Where आप ये जो इस तरह के old temples बनाने में काम आएगी या sculptures बनाने में काम आएगी. It's a different thing. मतलब मैंने खुद ऐसे कोर्सेज में करती रहती हूँ ना, इसीलिए कि जो आपके यूजुअल से थोड़ा हटके है. तो अगर आप छोटा सा भी कोर्स कर लेते हो तो इट एनहांसेस यू. आपने जैसे गणेशा किया है तो अब आप कोई मंदिर भी बना सकते हो, ऐसी और स्कल्पचर्स बना सकते हो, आर्किटेक्चर्स बना सकते हो, ओल्ड बिल्डिंग्स बना सकते हो. तो ये होता है, ये एक अलग जॉनर थोड़ा सा हो गया. इसीलिए मैंने इसकी वर्कशॉप अलग से रखी थी और बहुत डिटेल में ना, बहुत सारे वीडियोस के साथ. वी हैड ऑलमोस्ट 15 वीडियोस फॉर इट. Because I wanted people to learn how to draw something so complicated. Yeah. Ms. Sharma, you were showing your paintings. Please show them again. I could not see it that time. आप अपने को unmute कर लेना, please. This is really nice, Ms. Sharma. It's beautiful. I am doing on my own. I'm not following anybody. It's just I pick something online and then I start doing it. Okay. It's all very nice, Ms. Sharma. The only thing that I can tell you as a self-taught artist is that we paint well when we are artists, but we don't know why we do it. You understand? Without the techniques, I can paint, but I don't know why a certain color is put at a place. जैसे कि आपको ये नहीं पता कि मैंने यहाँ पे डार्क क्यों डाला, लाइट क्यों डाला, what is the reason behind it. So when we learn professionally, it gives a lot of clarity to our mind, and then we can do things on our own. Without, we can make our own paintings. They're all very, very nice. This is really pretty. Yeah. But it takes time, and at times I'm busy, full. My hands are full, and with the corona going on, I was not able to spend much of my time on it. वही है मिस शर्मा, आप कोई भी चीज जैसे सीखते हो ना, जैसे आप ड्राइविंग भी बहुत लोग खुद से सीख लेते हैं, लेकिन क्या होता है फिर रूल्स नहीं पता होते उनको. So sometimes they'll feel a little confused. Same is with art. तो इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनली सीखना इसको इम्पोर्टेंट है, तो आपके पॉइंट्स क्लियर होते हैं. मिसेस सिंह कैन शेयर हर एक्सपीरियंस लाइक वन शी लर्न, so she could make things on her own. She knew why a certain thing is painted a certain way. क्योंकि मेरी खुद की जर्नी है ये. I'm saying it from my point of view. क्योंकि I was painting since as a child, but लेकिन समझ ही नहीं आता था कि मैं ये ऐसा क्यों बना रही हूँ. That clarity comes with learning. Especially the light and dark and all that, no? Yes, the shadows, why we mix colors, why we put certain colors. How the artist is doing it. मतलब confusion में है कि आप देख रहे हो आर्टिस्ट बना रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है. You can copy him or her, but you can't make your own. यही फर्क हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा learning important है. So I think we can wrap up. अच्छा सौम्या आप बता दो. 6:30 I'll wrap up this meeting. मैंने एक पोर्ट्रेट बनाने के लिए ट्राई किया था. अच्छा. वो मुझसे ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे बैकवर्ड बना दिया. कभी कभी डिफरेंट शेड्स में मुझे स्किन का टोन समझ नहीं आता. अच्छा, एक तो अगर आप वाटर कलर करते हो तो उसमें व्हाइट हम ऐड नहीं करते हैं स्किन का टोन बनाते टाइम. ठीक है, आपको कोई भी स्किन का टोन बिना व्हाइट के बनाना है. आपको 2 कलर्स यूज करना है, एक येलो एक ऑरेंज और थोड़ा सा उसके अंदर ब्राउन. ये 3 कलर से आप कोई भी शेड बना सकते हो. तो आप ना मैच करते रहो उसको एक रफ पेपर पे मिक्स करके. ठीक है, व्हाइट मत डालो. ठीक है मैम. अगर मैं
मेरे पास वाटर कलर्स नहीं थे, इसलिए मैं पोस्टर कलर्स यूज कर रही हूँ। तो फिर अगर आप पोस्टर मैं- कलर यूज करते हो तो पानी बहुत ज्यादा डालना करो, ठीक है। वैसे तो वाटर कलर और पोस्टर कलर डिफरेंट होते हैं, पर अगर नहीं है तो पानी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा आपको। मैम मैंने मैं आपको ड्राइंग दिखाऊं दिखाओ। जो मैंने स्किन टोन्स हाँ पोर्ट्रेट ट्राई की थी हाँ बैकवर्ड। दिखाओ। जब तक वो ला रही है, हाँ जी ये मिस्टर। मोनिका, दिस इज Oh, this is so beautiful. I redid this. Very So can you nice. see the It's come whole up thing? so well. है ना? So you know what this helped me do? It helped me. I went through your videos all over again, हाँ जी। and that revision, and now the perspective was completely different from what है it ना? was the first time round. Clarity भी बहुत आ गई होगी दोबारा बनाने से. That's what. That's why Absolutely. practice is important. That's what I was mentioning. That's Yeah, very yeah, important to practice every day. yeah, yeah. Soumya, this is very So pretty. ये Why do you think it's not good? ये तो बहुत सुंदर बनाया आपने. आपको क्या अच्छा नहीं लगा इसमें? मैम मुझे ऐसा लगता है कि उसका वो अच्छे से नहीं बना है, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये भी काफी अच्छे से बना है. जैसे आप क्या करोगे ना, जैसे अभी आंटी ने बताया ना कि उन्होंने एक पेंटिंग जब दोबारा बनाई तो उनको बहुत क्लियर हो गया, उन्होंने दोबारा और अच्छे से बना दी. तो ऐसे ही होता है, कोई भी आपका जो पेंटिंग है ना खराब नहीं होता, वो सिर्फ प्रैक्टिस होती है, सिर्फ लर्निंग होती है वो, ठीक है। तो जब दोबारा बनाओगे तो और ज्यादा लर्निंग हो जाएगी, फिर और ज्यादा लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सुंदर बनाया है तो आपने. मैम मैंने एक वैक्स क्रेयॉन से एक गर्ल की भी पोर्ट्रेट बनाई थी। आप मुझे वो सब व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मैम ये वाली देखो मुझे तो सभी पेंटिंग सुंदर लगती है सौम्या, पता है, और ये भी बहुत प्यारी लग रही है. आप कितने साल के हो? 9। हाँ तो मैं तो बिल्कुल नहीं बना पाती थी 9 में. आप तो इतना सुंदर बना रहे हो, थैंक यू मैम। है ना। ऐसे ही धीरे धीरे और आर्ट में कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है, बस आप और इजीली बनाने लगते हो, ठीक है। जो थोड़ा मुश्किल से बनाते हैं वो थोड़ा आसानी से बनाने लगते हैं ज्यादा प्रैक्टिस से, लेकिन आर्ट हमेशा अच्छी होती है. आप मुझे ही दिखा दिया करो और किसी को मत दिखाया करो. मैंने फर्स्ट टाइम स्क्वेरल का स्केचिंग करने को ट्राई किया था। ओके. ओ माय गॉड, दिस इज सो क्यूट. अभी ये अच्छा नहीं लगा था। आपको अच्छा नहीं लगा था ये? माय गॉड, किसको दिखाया था आपने जिसने बोला ये अच्छा नहीं है? मैंने किसी को नहीं दिखाया था, बस मैंने अपने आप को दिखा बोला कि वो अच्छे से नहीं बना। आप किससे कंपेयर करते हो खुद को जो आपको ये अच्छी नहीं लगती? कोई और है जो आपको लगता है आपसे अच्छा बनाता है? मैम वो मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो एक फोटो था और फोटो से वो अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं सोचते बच्चे. आर्टिस्ट का ना अपना दिमाग उसमें आ जाता है पेंटिंग में, हमें किसी की नकल नहीं करनी है, ठीक है। जैसा हम बनाएंगे तो उसमें हमारा भी तो टच आ जाएगा ना, ठीक है। मैम क्या आप मुझे इस वाली स्किन टोन में कुछ बता सकती हैं? इसमें क्या पूछना है आपको? मतलब अगर मैं इस टाइप का स्किन टोन बनाना चाहती हूँ तो हाँ तो मुझे आपको इसमें ना वो लेना पड़ेगा, आपके पास बर्न सियाना होगा और उसके अंदर थोड़ा ऑरेंज और थोड़ा येलो डाल के, पर उसको बहुत पानी से पतला करना पड़ेगा. पोस्टर कलर से। पोस्टर कलर, अगर पोस्टर कलर यूज कर रहे हो तो आपको व्हाइट लेना पड़ेगा, अगर वाटर कलर यूज करते हो तो वाटर से उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आई हैव टू फिनिश दिस मीटिंग. आप मुझे वापस अपने व्हाट्सएप पे सारे डाउट्स भेज देना.
ओके मैम। Okay, मैम मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी भेज दूंगी। please भेज देना, and I'll do this one more meeting so that you can have more queries. I'll solve that. Okay. ओके, Okay, then bye bye. Bye bye, बाय Mr. मैम। Singh. बाय मैम। Bye bye.